Students, welcome to Physics with Field class. As in earlier class, we discussed about electric current and electric potential. And in today's topic, I am going to discuss about potential difference in detail with full explanation. As see the diagram first of all, there is a two water tanks A and B connected at lower level with tube. ओके इफ़ बोथ टैंक वाटर लेवल इज सेम, अगर दोनों टैंक में वाटर का लेवल सेम है, देन फ्रॉम विच लेवल वाटर विल फ्लो, अकॉर्डिंग टू यू फ्रॉम विच लेवल वाटर विल फ्लो इफ़ द लेवल इन बोथ दीज टैंक्स आर सेम. As according to me, the water will not flow because level is same. Water will only flow if there is a difference in level. If in A there is a high amount of water is present in comparison to B, then water will flow from A to B. Or if in B the water level is higher in comparison to A, then water will flow from B to A. But in this case the water level is same, so water will not flow. Clear? Water will flow only if there is a difference in level, high or low. Clear? Now move to second example, that is if two bodies are in contact, as the temperature of first body is 80 degree and the temperature of second body is 20 degree, then heat will flow from hot body to cold body. So heat will flow from hot body to cold body refers to a temperature difference. Refers to a temperature difference. Now move to a second page, as water will flow from higher concentration to lower concentration, as water is flow from high level to low level. Similar is in the case of the gas diffusion, as gas always flow from higher concentration to lower concentration, as you already studied in your class 9th about the topic of diffusion. Okay, second topic is in case of the electrons flow through a wire. इलेक्ट्रॉन वायर में से फ्लो करते हैं. एज इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू वायर ओनली इफ देर इज अ इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट ऑन अ वन साइड एंड द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेट ऑन द अदर साइड, then there is a creation of the potential difference. This level difference is known as a potential difference. If there is a electron rich plate on a one side and electron deficient plate on a other side, then electron will flow from रिच प्लेट टू डेफिशिएंट प्लेट. डेफिशिएंट प्लेट वो होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो. रिच वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में प्रेजेंट हो. तो वाटर हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में फ्लो कर रहा है. ये लेवल का डिफरेंस है. इस लेवल डिफरेंस ऑफ द लेवल को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस. Okay, there should be a potential difference across the wire if you want to flow a current. If you want to flow a current means if you want to flow a charge, then there should be a difference in a level of electrons, as in a one plate there is a electron rich plate, or on the other side there is a electron deficient plate. So electrons will flow from higher concentration to lower concentration, as it will create a potential difference. So if you want to flow a current, there should be a potential difference across the wire. ठीक है. एज दिस कंडीशन हेल्प अस टू क्रिएट अ सेल और बैटरी विच इज़ अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. आई विल एक्सप्लेन यू. For example, there is a structure of cell. In case of cell, there is a two types of the chemicals, C1 or C2. C1 and C2. There are two chemicals, C1 and C2. These chemicals are placed in such a way that one chemical extract the electrons from other chemical through higher amount, as it attract the electron through other chemicals. For example, C1 chemical attract the electrons of C2, as it will attract the electrons of C2, so it will become a negative because there is a electron rich, it become electron rich. And in the case of C2 where there is a electron deficient amount, become a positive charge. C1 केमिकल C2 केमिकल में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और वो इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा, और C2 में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा. ओके, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स रिडक्शन
and oxidation, as there is a reduction in a one chemical or oxidation in a other chemical. Reaction is in a process. Due to redox reaction की वजह से ही एक केमिकल इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है और दूसरा केमिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनते हैं. नेगेटिव एक साइड पर चला जाएगा और पॉजिटिव एक साइड पर चला जाएगा, और इसी वजह से सेल की क्रिएशन होती है. सेल ऐसे ही होता है, सेल की डायग्राम ऐसी होती है. दिस वन इज अ योर सेल डायग्राम. ओके, मोर डिफरेंस इन नेगेटिव और पॉजिटिव, मोर डिफरेंस इन नेगेटिव और पॉजिटिव, मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा नेगेटिव और पॉजिटिव का, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. क्लियर? ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ही ये सेल की क्रिएशन होती है, और जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नेगेटिव और पॉजिटिव में, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन. इट इज़ और अगर कहते हैं कि सेल ख़राब हो गया, इसका मीनिंग केमिकल ने अपना वर्क करना ख़त्म कर दिया है. केमिकल ख़त्म हो जाता है, केमिकल अट्रैक्ट नहीं कर पाता नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने में, इसलिए कहते हैं कि सेल अब ख़राब हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ good conductors and insulators. What are good conductors? Conductors are those which carry free electrons, as free electrons help us to pass electricity. Electricity pass easily through good conductors. Next, insulators are those which do not allow the current to pass, as there is a no movement of the electron took place. These are tightly bound insulators. Okay, the conductors allows the current easily, so it means resistance quality is low. The resistance quality in case of the conductor is very low because it easily passes the current through it, whereas in case of the insulator resistance is quite high, so small electrons pass through it. As small number of the electrons pass, it means it give more resistance to electrons, so resistance is quite high. So but in between the conductors and insulator, there is a one more property refers to a poor conductors. Poor conductors means which are good insulators but are poor conductors, which allow limited number of electrons to pass. वो सिर्फ थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाता है, मतलब कंडक्टर से थोड़ा सा पुअर होता है बट इंसुलेटर से थोड़ा सा अच्छा होता है, वो होते हैं पुअर कंडक्टर्स. इट यूज एज अ रजिस्टर इन अ सर्किट. एक तरह से इनको रजिस्टर की तरह यूज़ किया जाता है. Now come to the next numerical. There is a resistance, current flowing 15 ampere, and there is a voltage about 10 volt. Cell carries a voltage about 10 volt. So find current. And next diagram is find a current. There is a resistance is same and potential difference is 30 volt. Now solve this numerical. First of all, we have to find out the value of resistance. As according to our basic formula, I is directly proportional to V, so V is equal to IR, as the resistance is a constant quantity. So value of V is 10, value of current is 15, and value of resistance we don't know. So find out the value of resistance. It comes out to be 10 upon 15 ohm. Now put the value of the resistance. In this case, V is equal to IR. In this case, the value of voltage is 30, so we don't know the value of current. So put the value of the resistance, that is 10 upon 15, and it came out to be 45 ampere. Clear? Mention the unit as it is very important. So find the resistance of a circuit. V is equal to IR. The value of the voltage is 30. Current comes out to be 45, and resistance. The value of resistance comes out to be 2 upon 3 ohm. Please note this numerical. These are the basic one. Now come to the next topic. Okay. अब हमने पढ़ लिया था पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक वैल्यू इज़ डिफरेंट. ये हमें मालूम है कि 2 डिफरेंट पॉइंट्स में, फॉर एग्जांपल, we are going to put a charge from B to A point, and now the charge again move from A to B. ठीक है. Work done is same here, but when B has to return back to the A point, then it will stop here only. At that point, the potential difference, there is a potential difference at 2 point is different. For example,
at point A the potential quantity is A, and at the point of B the potential is 7. So there is a difference in amount because work done is not same in from this to this and from this to this point. द वर्क डन क्वांटिटी सेम नहीं होएगी. जब हम चार्ज को बी से ए तक लेके जा रहे हैं और जब चार्ज ए से बी तक आ रहा है तब वर्क डन सेम है, बट जब चार्ज बी से वापस होकर आएगा देन वर्क डन सेम नहीं रहेगा. अगर वर्क सेम नहीं है देन पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा. जो पोटेंशियल क्वांटिटी है ए पॉइंट में वो 10 है और जो पोटेंशियल क्वांटिटी है बी पॉइंट में वो 7 है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन अ पोटेंशियल. That is refers to a 10 minus 7. 10 minus 7 comes out to be 3. Okay, at two different points the potential, electric potential is different, so is known as a potential difference. उसको उस difference को हम क्या कहेंगे? Potential difference. Now come to the next topic. Which device is used to measure electric potential difference? इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? दैट इज़ वोल्टमीटर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 10 कूलम अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट. अगर दो पॉइंट्स में पोटेंशियल की डिफरेंस की क्वांटिटी 6 वोल्ट है और चार्ज कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं हम 10 कूलम, देन हाउ मच वर्क वी डू? 6 इज इक्वल टू वर्क अपॉन 10. इट रेफर्स टू अ 60 जूल. 60 answer is incomplete because they do not mention the SI unit as 60 joule is a complete answer. You have to refer a SI unit of work done. Now come to the next numerical. Calculate the potential of charge 40 coulomb when 200 joule of work is done to move from one point to another. Similar as earlier, V is equal to W upon Q. Put the value of the work upon charge 40. It comes out to be 15 volt. 5 volt आएगा आंसर इसका. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज. कि हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को कितनी एनर्जी देंगे पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी. ओके, एज यू मस्ट नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. कि जितना हम वर्क करते हैं वो वर्क की एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है. सो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी रिमेन्स सेम. सो डोंट कंफ्यूज इन इट. V is equal to W upon Q. W is refers to energy. So what is the value of the work done? It comes out to be 6 joule, similar as the quantity of energy. Okay, next note this numerical and do this. Calculate the electrical energy produced in 5 minutes when current of 2 ampere is sent through conductor by a potential difference of 500 volt. Okay, करंट कितना पास करें हम 2 एम्पियर and through which time 5 minutes. First of all you have to convert the time in SI unit, that is in seconds. I is equal to Q upon T. Charge comes out to be 600 coulomb. Next you have to find out the potential difference, work done. V is equal to W upon Q. Put the value of V, put the value of charge, you get the value of the work done. Please note this. I hope that you do not have any doubt. If you have any doubt, please let me know about it. Thank you.